गाइस भूल गया मैं। हेलो हेलो। आ गई आवाज़ आ गई। हेलो हेलो। चलो आज का प्रॉब्लम क्यों है? कल कल से कमाना भाई तुम मेहनत से। कल से तुम्हारी मजदूरी चालू है। सेम सेम मैन। एक तो ये आ जाते हैं भीख मंगे, एक तो ये स्ट्रीम पे चैट में 10 रुपए $10 दे रहे हैं ये ध्रुव साले। अरे भाई चलो आज का प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लिया था मैंने सुबह। यू गिवन एन इंटीजर नम्स, रिटर्न द सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द integers, sum of the divisors of the integers in that array that have exactly 4 divisors. 4 डिवाइज़र होना चाहिए, उनके सम ऑफ डिवाइज़र भेजना चाहिए। अच्छा, इफ़ देयर इज नो सच इंटीजर रिटर्न एरर 0। हाँ ऐसे तो हो गई। पहला टेस्ट केस देखते हैं। नम्स 21 4 7 दे रखे हैं। 21 का 4 डिवाइज़र है, 1 और 21 तो मतलब 1 और वो नंबर तो अपने डिवाइज़र होंगे ही होंगे। तो 1 और 21 का ऐसे 1 और 21 खुद ही है, 1 और 4 और 1 और 7। जैसे 3 का से 4 का 1 और 2 है, 1 और 4 है और 2 भी है। 7 का 1 और 2 1 और 7 है क्योंकि प्राइम है ना। तो उसके 2 ही डिवाइज़र हैं, तो सिर्फ हम 21 के ही 4 डिवाइज़र को ऐड करेंगे। जैसे कि 1 + 3 4, 4 + 7 इज़ 11, 11 + 21 इज़ 32। तो 32 आंसर है। और नम्स ऑफ 21 के तो 2 डिवाइज़र्स तो सेम ही रहेंगे। मतलब जैसे ऊपर वाले टेस्ट केस में देख लो, 21 के 4 डिवाइज़र है तो ऐड कर देंगे, 32 + 32 64 हो गए। 1 2 3 4 5 में है ही नहीं कोई, मतलब जिसका 4 डिवाइज़र हो। ठीक है, तो एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी मतलब मैंने सोची थी सुबह। आपकी रीडिंग लैग मार रही है? क्या मार रही है? तो एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी मैंने सोची थी। ठीक है, चलो वी विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, very fluent English. So like assume that x is a number which have 4 divisors, and the number is the divisor will be 1 and x. 2 out of the 4, 2 will be 1 and x itself, and we need to find other 2. ठीक है, and this should be prime and distinct primes, p1 and p2 primes, where p1 and p2 are primes with the power with power 1. वॉइस लैग कर रही लैग लग रही है। ओके भाई, इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता। वॉइस का तो कुछ कर नहीं सकता भाई लोग। वॉइस तो लैग हो रही थी भाई, इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता। वॉइस भाई मेरे यहाँ सही से चल रही है भाई, आपका नेट सही सुधारो। ध्रुव भाई आपका नेट सुधारो, मैं अपने फ़ोन में चेक कर रहा हूँ, वॉइस सही आ रही है। तो ठीक है, जैसे कि x है तो वो p1 और मल्टीपल होगा p2, 2 प्राइम का मल्टीपल होगा। तो ठीक है, 2 नंबर का मल्टीपल होगा, वो p1 p2 होंगे, उनकी पावर 1 होगी। ठीक है, अगर उससे
अगर पावर एक की भी एटलीस्ट ग्रेटर देन 1 हुई, एटलीस्ट देर इज एन प्राइम p prime such that it has a power i2 greater than equal to 2, so greater than 1, so that will at least be 2, so 2 plus 1, तो 3 तो यहीं मिल गए, ठीक है, 3 तो यहीं मिल गए, 3 सॉरी, और तो इसके डिवाइज़र होंगे p1 p2 p1 का स्क्वायर और 1, और अगर फोर्थ चाहिए तो हमें, फोर्थ के लिए तो हो नहीं सकता, ठीक है, फोर्थ अगर मतलब कोई भी अलग प्राइम, अरे यार ये कॉल क्यों कर रहा है भाई थोड़ा, व्हाट्स, एक तो तुम फ़ोन कॉल करने लग गया भाई, है करे क्या बंदा, ठीक है, p2 प्राइम है, सो अगर कोई भी रेस्ट तो 4 तो यहीं मिल गया हमें, मतलब एक और, ठीक है, 4 से ज़्यादा नंबर हो गए ना, जैसे कि अगर 3 + 1 2 है तो 3 × 2, सॉरी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, लेट मी एक्सप्लेन इट वेल. If a number is in form of in form of this p2, and we are not dealing with other primes, and this should be equal to x, so the total divisors will be 2 raised to plus 1 and 1 raised to 1 plus 1, so 2 and 3, and this will be at least 6. Huh? Let me start again. Okay, let's end this stream and I will come again in a few seconds. Okay, hello, we are back. अभी ऑडियो क्लैरिटी या लैग कुछ है तो बताओ, एक बार कमेंट्स में बता दो. हेलो, वी आर बैक. अभी ऑडियो क्लैरिटी या लैग कुछ है तो बताओ, ठीक है. हम क्वेश्चन कर रहे हैं आज का 1390, ठीक है. 4 divisors. Given an integer array nums, return the sum of divisor of the integers in that array that has exactly 4 divisors. So we are given an array, and we assume that we have some elements, and we need to sum the divisors of elements that have exactly 4 divisors. Like if a2 has 4 divisors, we need to check does it have 4 divisors. If yes, then we sum all the divisors of it, and that should be 4 divisors. We will adding 4 divisor x1, x2 and x3 and x4. We'll add them to the result, and we will do the same to every element. If there are more elements, we will apply the same logic here. Now what thing I observed that the 2 of the divisor will be 1 and the number itself, and there will be 2 other primes, p1 and p2, and the p1 and p2 are distinct, like in 21 we have 1 3 7 21, so 1 and 21 are dealt
we have already seen. And if we look at 3 and 7, they are both primes and distinct. And there is a, if you know a concept where if we are given a number x and we know the prime divisors of it, p1, p2 with power raised to a1, a2 and p3, a3 continuously, assume that we have infinite primes or multiple of that. So the to count the divisors, we just add 1 to the we firstly add 1 to all the powers and multiply them, a1 plus 1, a2 plus 1 and a3 plus 1, and continuously. And we will multiply all we will multiply them all together, and this will give us the count of divisors. Assume that we are given so okay, let's check, let's apply this for some elements. Let's assume x is equal to 4. The prime divisors of it are 2 to the power 2, so there are only 2 plus 1, 3 divisors. Let's check us. 1 is a divisor, 2 is a divisor, 4 is a divisor, so we only got 3 divisors. Assume we are given 24. Okay, let's prime factor it. 2, 24, 2, 1, 2, 2, 6, 3. We have 1, 2, 3, 2 threes and a single one, and total divisor will be 3 plus 1 multiplied by 1 plus 1 for the power of 3, and 2 and 4. There are 8 divisors for it. Let us count. 1 is a divisor, yes. 2 is a divisor, yes. 4 6 are 24, yes. 5 is a divisor, no. 3 is a divisor, 7 3s are 21, yeah, 3 is a divisor, sorry. And 4 is also a divisor, and 5 is a divisor, no. 6 is a divisor, yes. 7, no. 8, yes. 9, no. 10, no. 10, no. 11, 9, 12 2s are 24. So we will stop here. Let's count 1 2 3 4 5 6 7, and let's let's look at the divisor. It's 3 or 6 6 whatever, and 24 itself is a divisor of it. So we get 8 divisor. 1 2 3 4 5 6 7 8 divisors. So the formula gives us. And what are our observations, right? For a given number x, 1 and x will be the two divisors, and we need to find p1 and p2 that divide x. Okay, and there should be no other divisors other than p1 and p2. Okay, we can find the first prime using prime factorization or prime okay, we can find the first prime using prime factorization, p prime, using in root n time. And when we find p1, and we will again we can get a p2 by dividing n by p1. This will give us p2, and this p2 should be also a prime, and we should check it. Okay, Dhruv is not here, I think. Let's code it out. I've connected my keyboard. Write our observations. Observations are assuming x is a assuming x is a 4 divisor, has only
4 divisors that are 1 and x and p1 and p2, and p1 and p2 are primes, distinct prime, dist and ct primes. Okay, let's use an result variable to store the result sum of divisors and return it, and we will iterate for each element. For current x, int will take one value we will take one value from the array and check it. Is it has four divisors. Okay, first let's assume p1 will be 1 for int I equal to 0, -1. Let's assume it is -1, and we will iterate to root n time 12x and I plus plus. If I divides x, then the result remainder should be 0. Then we'll break, and I should be I equal to p1 prime p1 equal to I, and we'll always encounter prime first, then the divisor of it. Okay, now int p2 will be x divided by p1. If p1 is -1, if p1 is -1, then what we will do is we will continue. We won't look further, because it is prime. The number should be prime. Then for p2 we need to check if it is a prime. For prime, we can write a function that also work in root time. Public boolean that will return boolean is prime int x. For int I equal to 2, I is less than I into I less than equal to x, and I plus plus. In the end, we shouldn't return true. It's a prime. Else, if we haven't found any divisor of it, it will return true. If we found any divisor, if I divides x, then it is a multiple of it, and the given variable is not a prime. Return false. So this should work. If p2 is prime, check p2 is prime, then we will add a result equal to 1, result plus equal to p1 p2 plus p2 plus current variable, the number we are checking for it. Okay, let me indentate it properly, and let's check for any errors we have done. I2, okay, boolean prime runs from 2 to root n time to root of x, I plus plus. If current I is a divisor of it, it return false, else return true. It's didn't encounter it. And for 1 we will continue. Okay, we will first for 1 I think it is doable, and it will be no edge cases. I think p2 should be and p1 is a smallest prime number, that is a divisor of x, and p2 is another divisor that is greater than p2.
that is greater than p1. P2 is greater than p1, and it is also a prime. What happened? Okay. Okay, I should also deal with 1 here. Greater than equal to 1, return false. I x equal to 1, return false. I think this should do it. I think I added 4 and 7 also. No, I have added 7 to the result. That's why it's 64, 32. 32 plus 7 is 1, 4, 4, 5, 6, 7. 7. 32 minus 31 is 9. P1, P2 and X, the number itself. We should actually I should print all the parent and all the primes, all the first divisor and the second divisor. Let me 2 and 2. Oh, 2 is also prime, and okay, or x divided by p1 equal to x to p1 itself. We will continue because that is neither case we are looking for. I think this will do it. Yeah. For this forgot the case where p1 has power greater than 1. That is p1 and p2 are equal. If it's more than 3, then at the end it won't be a prime. This will do it. There was an edge case I didn't. Oh shit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 has an how many divisor? 2, 3, 4. 4 plus 3, 3 is 9. 3 की power 3. 4. 8 also 4. 4 and 10. 10 doesn't have any. Yeah. Okay. 2 and 5. Let me check it. 6 doesn't have any. 6 is the answer, one of the answer. 2 and 3. 2 and 3. Let me copy this case. This is case. I'm missing something. Why I am become so noob? 1, 3, 1, 4, 2, 5. 10 has also 1, 2, 5, and 9 doesn't have. 3 की power 3. 3 is a 9. 1, 3, 9. Okay, 3 doesn't have. 6 have. Does 6 have? 6 has 3 divisor. 4 doesn't have. Yeah, 4 doesn't have. So 3, 4, 5. 5 plus 7. 7 plus 4 is 7 plus 4 is 11. 11 plus 5, 16, 20, 21, 22. Okay.
what I am missing. Output expected 45, but I am not missing any case. Let me check again. Let's do some scribbling. 2 and 3, 6 has 3 divisor, 1, 6 and 2 and 3, 3, 4, 5, 5 plus 6 is 11, 11 plus 12, 12, 12, we got 12 here, 2 plus 4, 8, for 8, 4, 6, 6, plus 1 plus 8, 9, 9, 15, 12 plus 15 and 10, 10 plus 7, 18, this will be result to 18, 18, 8, 9, 10, 5, 1, 2, 3, 4. Okay, what I am missing here is I haven't. If P2 is a prime, then I add 1 to the result P1 and P2 and X itself. But that is not the case, I think I'm doing here. 5, 10. This my trace give me the right answer, but this doesn't give me. P1 and P2 equal to P1. What I'm missing, let me calculate. You add and you. Wait, give me a second, bro. 1 plus 2 plus 3. 2 plus 3 plus 6. 12 plus 1. 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 2 plus 5 plus 10 plus 1. What I'm missing? I plus plus x divided mod y p1. Am I missing something here? You give me add in 1 second. I will do it this problem. Let me fix my one slight edge case. Let me print here all the P2 plus this. दो बंदे आके चले गए. 6 का हुआ, 10 का हुआ, 9 का तो नहीं है, 8 का था. ओके, P1 P2. फोर के लिए क्यों नहीं होगा? मतलब नहीं, 8 के लिए तो हो सकता है ना. 8 का खुद, अच्छा या 8 का मिस हो गया. 8 का 1 and 1 2 4 8, तो 2 भी है, 2 भी है. ऐसे मिस कर रहा हूँ क्या? 8 8 4 नहीं, जैसे 2 की पावर 2 है. ओके, ओनली 2 डिस्टिंक्ट हो सकते हैं क्या? 4 भी ऐड हो सकता है. अच्छा, प्राइम्स होना ज़रूरी नहीं है P1 P2. वो फर्स्ट एजम्पशन ही गलत था हमारा. मतलब एग्जैक्टली 2 प्राइम्स होने चाहिए या either x is P1, either P2 should be a prime or it should be okay. This is wrong.
और P1 equal to -1 or P2 is a prime or P2 is or the P2 equal to P1 times P1 when power 2. I think this will do it. Uh-huh. 9 कैसे आ गया? 2 4 भी आ गया. 1 2 के पावर 2 2 plus 2 1 is 3 9 and P2 not equal to X itself. That won't be a case, I think. भाई let me again copy it. P2 जो है फोर डिवाइजर्स ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता. पर let me count the divisors again. Let's make a divisor list. Okay, array list of integer, new array list, add 1 ll add x dot add x, add I, and if x divided by I is not equal to I, then we will add an x divided by I. If ll dot size not equal to 4, continue, else we will add to the result. This will do it. Always have int value in ll, result plus equal to value. Let me remove this. Okay, this works. यो शिखर लगा तू ही है भाई, दोस्त तू ही है, कोई नहीं दिखता. मैं भाई मेरा अजप्शन गलत था इतनी देर से. हाँ हाँ, क्या हो रहा है भाई? कौन सा टेस्ट केस है? टू से लेके x तक. क्या हो गया भाई? 4 डिवाइज़र ही काउंट करने हैं, वो भी नहीं कर पा रहा मैं. 4 से ज़्यादा हो तो क्या करें? 4 से ज़्यादा भी काउंट हो रहे हैं क्या? नॉट इक्वल टू 4 है. जैसे कौन से नंबर हैं जो 4 ही डिवाइज़र देंगे पर है ही नहीं वो एक्चुअली, दैट आर नॉट गुड. उनके 4 से भी ज़्यादा डिवाइज़र हैं.
उनका पावर एटलीस्ट 3 हो। अच्छा ओके, एल्स ब्रेक एक बार टेस्ट केस ये कॉपी कर लेता है, नहीं यूज दिस टेस्ट केस। अच्छा ये काम अभी काम कर रहा है ये। हाँ। चलो हो गया भाई आज का प्रॉब्लम। मेरे को लगता नहीं है ये मैंने सही करा है, बहुत ही गंदा लिखा है मैंने इस बार। चार डिवाइज़र काउंट नहीं कर पाया मैं। ठीक है एक बार इंडेंटेट कर लेता हूँ प्रॉपरली। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल था जिसमें 8 था, 8 को मान लेते हैं 8 है, तो 8 भी आंसर है 1 2 एंड 4 और 8। तो इधर दूसरा डिवाइज़र प्राइम नहीं है, 4 इज़ नॉट ए प्राइम। बट क्या, बट इसकी पावर 2 है, 2 की पावर 2, और ये P1 या P2 है। ठीक है, इस फॉर्म के नंबर ही होंगे, मतलब एक प्राइम है जिसकी पावर 2 है, इधर नंबर x की पावर 1 है, 2 की पावर 2 सॉरी ओके। चार डिवाइज़र के होने के लिए एक प्राइम होना चाहिए जिसकी पावर 3 है, या P1 दो प्राइम हो जिनकी पावर 1 हो, तो कब 2 + 2 4 बनाएंगे। ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा ये भी कर सकते हैं, चेक इफ़ द फर्स्ट प्राइम इज़, चेक इफ़ हम कर सकते हैं कि पहले x के लिए, पहले प्राइम के लिए क्या वो 3 बार आ रहा है, x1 x2 x3 टाइम्स, 3 टाइम आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है मतलब 2 टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो दूसरा 2 बार आएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, कब नहीं होगा। ये नंबर इसी फॉर्म के होना चाहिए, P3 या P1 या P2 के होने चाहिए, तो तभी होगा आंसर। तो मैंने 4 की लिस्ट बना ली बस। हम एरे लिस्ट में ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये एरे लिस्ट हटा देते हैं। इंट करंट बूलियन ले लेते हैं, बूलियन करंट, ठीक है। और करंट बूलियन फ्लैग ले लेते हैं, फ्लैग इक्वल टू ट्रू है, और P1 भी हटा देते हैं, और करंट जो करंट टोटल बनना चाहिए हमारा हो गया, इंट करंट टोटल एटलीस्ट 1 + x होगा, 1 + x होगा, और करंट में हम करंट प्लस इक्वल टू करंट आई डाल देंगे, और इसका दूसरा डिवाइज़र डाल देंगे, करंट डिवाइज़र दूसरा डिवाइज़र डाल देंगे, दूसरा डिवाइज़र डाल देंगे। क्या करेंगे, इसका करंट प्लस इक्वल टू x एंड x डिवाइडेड बाई जो भी है, x डिवाइडेड बाई आई कर देंगे, एंड ब्रेक कर जाएंगे यहाँ से ही। एल्स फ्लैग फॉल्स कर देता हूँ, फ्लैग फॉल्स एंड ब्रेक फ्रॉम हियर। फॉल्स एंड ब्रेक फ्रॉम हियर, एंड यहाँ पे चेक करेंगे क्या, ये भी लूप की ज़रूरत नहीं है, इंडेंटेट प्रॉपरली करते हैं, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। लूप क्लोज हो गया ही,
फ्लैग ट्रू है, फ्लैग ट्रू है एंड जो करंट x इक्वल टू 1 है, तो हमने माना कि हमारे सिर्फ 2 ही डिवाइजर्स थे, तो करंट रिजल्ट पे प्लस इक्वल टू करंट कर देता है। मुरा बाबा, करंट प्लस इक्वल टू x, करंट प्लस इक्वल टू i, करंट प्लस इक्वल टू x, करंट डिवाइड बाय i, सॉरी वो x से मल्टीप्लाई नहीं, करंट x डिवाइडेड बाय i, ये ऐड करना था है। फ्लैग ट्रू नहीं है क्या? टू और 1 के लिए तो फ्लैग ट्रू ही होगा ना। और ठीक है, x 1 है क्या? इफ x इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं x इक्वल टू 1, कंटिन्यू टी 1 प्लस एक्स करंट में ऐड कर दिया है, मतलब ठीक है। और दूसरे 2 डिवाइजर्स i और x डिवाइड बाय i होंगे, x डिवाइडेड बाय इक्वल टू i होंगे। इफ़ नॉट इक्वल टू, डिवाइड्स करते हैं, इफ x नॉट इक्वल टू i, देन x डिवाइड बाय ऐड करते हैं और x डिवाइड बाय इक्वल टू i को करते हैं, ठीक है। और जो भी करा है और i से डिवाइड करा है, और दूसरा वेरिएबल कौन सा है, इंट p2, अगर यहाँ पे t मान लेते हैं टेम्परेरी x डिवाइड बाई, और x से भी डिवाइड करना चाहिए ना, x डिवाइड बाई इक्वल टू t। अब काम करना चाहिए, एक बार i से डिवाइड कर दिया, और इक्वल टू 1 होना चाहिए, और इसका भी डिवाइज़र भी तो होने नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हटा देते हैं। x डिवाइड बाई आई एंड x तो t है, t ऐड कर देगा, और ये t shouldn't be and ये t डिवाइड बाई इक्वल टू 0 है, मॉडुलो फ्लैग फॉल्स कर दो। t डिवाइड बाई आई है, पर 4 के लिए तो हो सकता है ना, पर ओके एक और बार कर दो t को, t डिवाइडेड बाई आई, मतलब 3 टाइम्स नहीं हो, ये काम तो करना चाहिए यार। हाँ भाई, क्या होगा मेरा? टू से डिवाइड होगा, अब x t से भी डिवाइड हुआ, x ब्रेक कर गया, x इक्वल टू 1 होना चाहिए तभी होगा,
प्राइम के लिए भी नहीं होगा। अच्छा, फ्लैग फॉल्स है जब 2 बार एटलीस्ट 2 टाइम्स है एक्स, मतलब 3 टाइम्स है, एटलीस्ट 3 टाइम्स है, तो कब भी फॉल्स होगा, तभी फॉल्स होगा ना, तभी फॉल्स होगा। तो कौन से यहाँ पे देखते हैं, 21 के लिए कौन सा ऐड हो रहा है, 32, 7 भी नहीं, 4 भी ऐड हो रहा होगा, 1 2 4 7 नहीं। यहाँ से ब्रेक हो रहे हैं, आई सिस्टम और द प्रिंटर। सेवन 3 4 और 2 और 2। ओके, एंड टी नॉट इक्वल टू और टी इक्वल टू आई, तब भी फॉल्स होना चाहिए। कुछ टेस्ट केस के लिए हो रहा है, ठीक है भाई, चलता हूँ मैं, कोई टेस्ट केस के लिए हो नहीं रहा। फोर के लिए तो हो सकता है, ठीक है, डिवाइज़र ही देखने हैं। पावर 3 एक बार कर दिया, अच्छा, पर इसमें ये दिक्कत आ रही है कि हम सारे देख नहीं पा रहे, इसलिए ओ कंट्रोल Z डर रही यार, वो चेक भी करना था ये प्राइम है कि नहीं। ठीक है, पहले वाला कोड सही है। 4 डिवाइज़र देखें, खाम 4 डिवाइज़र देखें, ठीक है, 4 डिवाइज़र मिले, 4 डिवाइज़र ऐड कर दिए, और LL डॉट साइज कर देते हैं इज़ लेस देन 4। लेस देन इक्वल टू भी कर सकते हैं, क्या पता आगे जाके ब्रेक हुए ये कंडीशन। ठीक है, अब करते हैं, ठीक है, अब थोड़ा ऑप्टिमाइज़ हुआ है, 34 से 13 ms आ गया है कंडीशन की। भाई वाह करो, हमने अपने कोड को अच्छा चला दिया है। डिवाइज़र्स ही देखने हमें, ठीक है, कर तो लिया ये क्वेश्चन, अगर दूसरे फॉर्म में देखते हैं। मैथ का क्वेश्चन था, ठीक है, वर्स्ट केस एक्सपीरियंस,
ठीक है, एंड करते हैं यहीं पे।